Welcome my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope all of you will be fine with the blessings of Almighty Allah. After a long period of time, I have started video lectures for class 10th on the behalf of Islamic Public Higher Secondary School, BK Pura and Stalwart Career Coaching Institute, BK Pura and Kralapura. I hope all of you will enjoy this video lecture. Let us start. Today we are going to discuss about acids, bases and salts. We have already read in the previous chapters that there are almost 115 elements. There are almost 115 elements. When these elements combine with each other, they form different compounds. These compounds have different physical and chemical properties. On the basis of chemical properties, these compounds have been classified into three major groups: acids, bases and salts. Okay, acids, you all know that they are sour in taste. Bases are bitter in taste, and salts are salt in taste. But here the problem is that we cannot taste all these compounds to tell whether it is an acid or base, because most of the acids, most of the bases and salts, they are highly corrosive and dangerous. Then we cannot taste them. Then how we can tell whether a compound is acidic or basic? For that we have indicators. We have indicators, or we can write as acid base indicators. Acid base indicators. What are indicators? Indicators are those chemical substances, those chemical substances which shows us whether a solution is acidic or basic by changing its color. Those chemical substances which shows us whether a solution is acidic or basic by changing its color. It means that indicators, they show one color in acidic solution and another color in basic solution. Okay? Indicators, they are usually weak acids or weak bases. There are various types of indicators. One of them is natural indicator. Natural indicators. What are natural indicators? Natural indicators. Natural indicators are those indicators which are obtained from natural sources. One of the most common type of natural indicator is litmus. This litmus is obtained from lichens, which belongs to the division Thallophyta of plant kingdom.
This litmus, it is mainly obtained from Rossilla tinctoria, which is one of the species of lichens. A litmus, it is a mixture of different compounds. It is a mixture of different compounds. Its color is purple. This color is purple. Then, how litmus shows whether a solution is acidic or basic? In acidic solution, its color is red, and basic solution, it shows blue color. Litmus नेशनल इंडिकेटर एक है हमारे पास, है क्या? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम लाइकेंस, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं थैलोफाइटा डिवीजन से. जो लिटमस है इसका जो कलर होता है दैट इज पर्पल. एसिडिक सॉल्यूशन में जो कलर होता है रेड आता है इसमें. बेसिक सॉल्यूशन में जो इसका कलर होता है ब्लू. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, this litmus, purple extract of litmus, it is in the form of two different solutions. एक हमारे पास होता है red litmus solution and blue litmus solution. Also, they are present in red litmus paper and blue litmus paper, only for the sake of convenience. Natural indicators हम पढ़ रहे थे. Natural indicators, those indicators which are obtained from natural sources. For example, litmus, इसका source क्या है? lichen, ठीक है. मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, पर्पल कलर, एसिडिक में इसका रेड कलर होता है, बेसिक में इसका ब्लू कलर होता है. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सॉल्यूशंस. रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर. अनदर एग्जांपल ऑफ नेशनल इंडिकेटर इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, इसका जो कलर होता है इस एक्सट्रैक्ट का दैट इज रेड, ठीक है. एसिड में इसका कलर रेड ही होता है, ठीक है. बट बेस में इसका जो कलर होता है दैट इज ग्रीन. एक और एग्जांपल हम लिखेंगे टर्मरिक, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? हल्दी. इट इज येलो इन कलर, ठीक है. एसिड में इसका कलर होता है येलो और बेस में इसका जो कलर होता है दैट इज रेडिश ब्राउन. Another example is are petals of some flowers. Petals of some flowers like hydrangea, petunia, etc. जो हाइड्रेंजिया एक प्लांट है, इसका जो पेटल होता है उसका
ब्लू कलर होता है, ठीक है। एसिड में इसका कलर ब्लू ही होता है और बेस में इसका जो कलर होता है दैट इज पिंक। Another type of indicators are synthetic indicators. Synthetic indicators. What are synthetic indicators? Synthetic indicators. Synthetic indicators are those indicators which have been prepared in the laboratory, also known as man-made indicators. Man-made indicators. For example, phenolphthalein. Phenolphthalein. It is a synthetic indicator. It is colorless. क्या होता है? Colorless. एसिड में भी ये कलरलेस ही होता है। एसिड सॉल्यूशन में भी क्या कलरलेस होता है, बट बेस में जो इसका कलर होता है इट चेंजेस टू पिंक। फिनोल्फथलीन सिंथेटिक इंडिकेटर है विच इज कलरलेस। एसिड में भी ये कलरलेस ही होता है, बट बेस में जो इसका कलर होता है दैट इज पिंक। फिनोल्फथलीन के बाद एक और एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इसका जो कलर होता है दैट इज ऑरेंज कलर। एसिड में भी इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज ही होता है, सॉरी रेड कलर होता है। एंड बेस में इसका जो कलर है दैट इज येलो। ऑब्जेक्टिव एक आया था एग्जाम में, फिनोल्फथलीन इज ए वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। इसका जो आंसर है फिनोल्फथलीन इट इज ए वीक एसिड। ये लिख के रखो आप, मिथाइल ऑरेंज इस तरह आप लिख के रखो, इट इज ए वीक बेस। एक और एग्जांपल है सिंथेटिक इंडिकेटर की, दैट इज थाइमोल ब्लू। इसका जो कलर होता है दैट इज ब्लू। एसिड में इसका जो कलर होता है रेड, एंड बेस में इसका जो कलर होता है दैट इज येलो। These are synthetic indicators. One more type of indicators are olfactory indicators. Olfactory indicators. Can anybody guess what are olfactory indicators? Okay, let's. Olfactory indicators. Olfactory indicators are those indicators whose smell changes in the acidic and basic solutions। यानी कि जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं इनकी स्मेल चेंज हो जाती है
किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहां पे ओनियन एक्सट्रैक्ट। ओनियन एक्सट्रैक्ट, onion extract, it has its own characteristic smell. It has its own characteristic smell. If we take a small piece of cloth, clean cloth, and we put chopped onion extract in the cloth, when this cloth is treated with an acid, the smell of the onion is retained. It does not disappear. But when this cloth is treated with a base, the smell of onion disappears. जब हम एसिड उस क्लोथ पे डालेंगे, जो स्मेल है किसकी, ओनियन की, वो खत्म नहीं हो जाएगी। बट अगर हम उस पे बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, देन जो स्मेल है किसकी, ओनियन एक्सट्रैक्ट की, दैट disappears. Then we can say that a solution is basic. Another example is that vanilla extract. Vanilla extract, it has its also own characteristic smell, but its characteristic smell is retained in acidic solution. That means vanilla extract की जो स्मेल होती है एसिडिक स्मेल सॉल्यूशन में, वो क्या, डिसअपियर नहीं हो जाती, बट लूजेस इट्स स्मेल इन बेसिक मीडियम। बेस में इसकी स्मेल खत्म हो जाती है, एसिडिक सॉल्यूशन में इसकी स्मेल वो खत्म नहीं हो जाती। These are all factory indicators. Another example is clove oil. Clove oil. It has its also own characteristic smell. That smell is retained in acidic solution, but it also loses its smell in basic medium. These are the all factory indicators. This was the topic of today. I will revise what we have learned today. First of all, we defined indicators. I tell you, indicators are those chemical substances which shows us whether a solution is acidic or basic by changing its color. There are different types of indicators. First one is natural indicator. Natural indicators are those indicators which are obtained from natural sources. Litmus, red cabbage extract. Another type is synthetic indicators. Those indicators which have been prepared in the laboratory, like phenolphthalein, methyl orange. Another type, olfactory indicators whose smell changes in acidic medium and basic medium. For example, onion extract, vanilla extract, clove oil. I hope all of you have understand this. Inshallah, I will be back soon. Thanks.